Hello guys, welcome to the channel. My name is Prince and she is Priyanka. Hey, I hope you all are very safe and sound. फाइनली हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं एंड वैक्सीन सिर्फ ओपन हुई है हॉटस्पॉट एरियाज़ के लिए मिसिसागा में और हमारा नंबर आ गया है और फर्स्ट वैक्सीन डेट है आज की May 7th. सेकेंड वैक्सीन डेट है 27th of August, which is after 4 months. I think 2 दिन पहले they have opened the website through which you can book your appointment and luckily we got the appointment for today. उसमें भी काफ़ी रश था, right? बहुत रश है. Okay मैडम, आ जाओ. So फिलहाल अभी हम आए हैं सर्विस ओंटारियो बिकॉज हमारा जो हेल्थ कार्ड है वो भी एक्सपायर हो गया है, तो हेल्थ कार्ड भी रिन्यू करना है. सो देखते हैं जो हमारा अपॉइंटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमें मिलता है अंदर जाने या फिर बाहर भगा देते हैं. अंदर आने तो मिल गया क्योंकि अपॉइंटमेंट कर रखा था. वी आर लेट बट स्टिल गॉट द एंट्रेंस. सॉरी, ओके, सो बोथ ऑफ अस नीड्स टू होल्ड द फॉर्म. ओनली द हाईलाइटेड तो हमारा जो ओहेप रिन्यूअल का काम था वो तो हो गया. अभी यहाँ से हम जाएंगे जो हमारा वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ के लिए. अभी हम यहाँ से निकलेंगे. इट्स अ 20-minute ड्राइव. माई अपॉइंटमेंट इज़ एट 5 o'clock. तो लेट्स गो, देखते हैं वहाँ पे. वन मीडियम. You want a hash brown, right? No, you don't want. No, cancel the hash brown. Okay. Thank you. I can't see. So it has been advised that before vaccination you should eat something, and yeah, you should eat something. So that's why we are having timmies and some bagels. So right now we are in the center. Line है. It's a very long hall. Thank you. Sure. Yeah. It's okay. थोड़ा सा बम्प लगा था बट didn't feel anything. And so we have got our first dose of COVID vaccine. We got Pfizer. Second dose का कोई पता नहीं है. I think it will be in 2-3 months. But काफ़ी सिस्टमैटिक था. I mean, जाते ही सीधा
कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, देन दे चेक द टेम्परेचर एंड देन विद इन 2 minutes वी गॉट द वैक्सीन. बट उसके बाद 15 minute वी हैड टू वेट इन द ऑब्जर्वेशन और now we are feeling good, huh? So guys, we have came back to our home. वैक्सीन लगे हुए 3 घंटे हो गए, तो एज सच तो कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी तो नहीं हुई है. बट व्हाट दे हैव सेड कि आप एक दिन अपने आप को ऑब्जर्व करो, अगर कोई फीवर है या फिर नॉजिया काइंड ऑफ सिचुएशन हो तो दे हैव आस्क्ड टू रिपोर्ट इट बैक. होपफुली ऐसा कुछ अभी तो नहीं लग रहा है, बाकी कल देखते हैं. इवन कोई पेन भी नहीं है शोल्डर में. थिंग्स आर लुकिंग गुड. बस अब यही होप है कि आप सभी को और पूरी दुनिया में जितने भी हैं सबको जल्दी से जल्दी ये सारी वैक्सीन लग जाए एंड वी गेट आउट ऑफ दिस मिस. दैट्स ऑल आई कैन विश फॉर नाउ. सो आज का व्लॉग फिर यहीं तक रखते हैं गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू विद द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.